Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn-1, public speaking segment lecture number 1, part 1. Ladies and gentlemen, today we are going to talk about the 7th unlearning of public speaking. Public speaking is only for public speakers. Never think that. Public speaking केवल public speaker के लिए होता है, ऐसा कभी नहीं सोचिए. Why should I learn when I'm not a motivational speaker? Why should I learn when I'm not a public speaker? And why should I learn when I'm not a storyteller? क्यों मैं यह सीखूं जब मैं एक पब्लिक स्पीकर, एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक स्टोरी टेलर नहीं हूं? It's not necessary that in public speaking you have to speak in front of the 1,000 people. यह जरूरी नहीं है कि पब्लिक स्पीकिंग में केवल आप thousands of people के लोगों के सामने बात करें. It's a public speaking when you're talking in front of your friends. It's a public speaking when you're talking in front of your family members. And it's also a public speaking when you are talking in front of your colleagues, your boss in the office. दोस्तों, यह एक पब्लिक स्पीकिंग होता है जब आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड कलीग्स को ऑफिस में बात करते हैं, उनके सामने आप अपना बात रखते हैं. तो जरूरी नहीं है कि थाउजेंड्स ऑफ लोग हों और उनके सामने आप बात करो, उसी को हम पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं. इट्स अ पब्लिक स्पीकिंग व्हेन यू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द क्राउड, स्टैंड अलोन एंड स्पीक. यह पब्लिक स्पीकिंग होता है जब अपने आप को आप क्राउड से सेपरेट करते हैं, यू स्टैंड अलोन एंड स्पीक. दैट इज द पब्लिक स्पीकिंग. वेर एवर यू विल बी इन पोजिशन ऑफ योर ऑफिस, आप अपने ऑफिस में कोई भी पोजीशन में हो सकते हैं. यू मे बी अ टीम लीडर, यू मे बी अ इंजीनियर, यू मे बी अ बॉस और यू मे बी अ एंटरप्रेन्योर. कोई भी हो, इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू बिकम अ लीडर, यू हैव टू स्पीक. यदि आपको अपने लाइफ में ग्रो करना है और एक लीडर बनना है तो आपको बात करना पड़ेगा. बिकॉज पीपल विल फॉलो यू, पीपल विल वॉच यू, पीपल विल वॉच योर टॉक, द वे यू स्पीक. लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपको देखेंगे कि आप कैसे बात करते हैं, whether you have quality of leader or not. So friends, never think that public speaking is only for public speaking. We have to speak if you want to become a leader. So friends, these are the 7 unlearning of public speaking which help me to speak very effectively in front of the public. I also recommend you to unlearn these in your stage and speak effectively and grow in your life. With this, I am BP Verma signing out until we meet again.